Hello, welcome to all of you guys in online O-level classes. Today we discuss a part second of a second chapter, Introduction to Operating System. If you didn't subscribe my channel, please do it now and also hit the like button. Let's start. First topic, operating system for mobile phones and tablet. A mobile operating system, also called a mobile OS, is an operating system that is specifically designed to run on a mobile devices such as a mobile phones, smartphones, PDA, tablet computers and other handheld devices like Android operating system, iOS operating system, BlackBerry operating system and Windows operating system for mobiles. Let's discuss our first operating system, Android operating system. The Android mobile operating system is Google's open and free software stack that include an operating system, middleware and also key application for use on mobile devices including smartphones. एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल्स ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर्स का एक स्टैक है जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर और स्मार्टफोन सहित मोबाइल उपकरणों का उपयोग के लिए प्रमुख एप्लीकेशंस शामिल हैं. सेकेंड वन, ऑपरेटिंग सिस्टम iPhone OS. Apple's iPhone OS was originally developed for use on its iPhone devices. Apple का iPhone OS मूल रूप से अपने iPhone उपकरणों का उपयोग के लिए विकसित किया गया था. Now the mobile operating system is referred to as iOS and is supported on a number of Apple devices including the iPhone, iPad, iPad 2 and iPad Touch. अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को iOS के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और आईफोन, आईपैड, आईपैड 2 और आईपैड टच सहित एप्पल के कई उपकरणों पर सपोर्ट करता है. एप्पल iOS इज ड्राइव्ड फ्रॉम एप्पल्स मैक OS X ऑपरेटिंग सिस्टम. एप्पल iOS एप्पल के मैक OS X ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है. Third one, BlackBerry operating system. The BlackBerry operating system is proprietary software system developed by Research in Motion for use on the company's popular BlackBerry handheld devices. BlackBerry OS एक proprietary software जिसे कंपनी के लोकप्रिय BlackBerry handheld devices पर उपयोग के लिए Research in Motion द्वारा विकसित किया गया था. The BlackBerry platform is popular with corporate user as it offers synchronization with Microsoft Exchange, Lotus, Domino, Novell, GroupWise email and other business software when used with the BlackBerry Enterprise servers. BlackBerry Enterprise उपयोगकर्ताओं के साथ BlackBerry प्लेटफॉर्म लोकप्रिय है क्योंकि यह Microsoft एंटरप्राइज सर्वर के साथ उपयोग किए जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, लोटस, डोमिनो, नोबेल, ग्रुपवाइज ईमेल और अन्य व्यावसायिक सॉफ्टवेयर्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करता है. एंड नेक्स्ट वन, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज OS फॉर मोबाइल्स. Windows Phone 10 is a mobile operating system marketed by Microsoft as an addition of Windows 10. विंडोज़ फ़ोन 10 एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ 10 के एक संस्करण के रूप में बेचा जाता है. विंडोज़ फ़ोन 10 was released in November 2015 and is included in Microsoft smartphones and tablet. विंडोज़ फ़ोन 10 नवंबर 2015 में जारी किया गया था और यह माइक्रोसॉफ्ट के स्मार्टफोन और टैबलेट में इस्तेमाल होता है. इट फीचर्स सपोर्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्स एंड ऑल्सो लेट यू सिंक्रोनाइज योर नोटिफिकेशंस बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस. यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऐप को सपोर्ट करता है और आपको कई उपकरणों के बीच अपनी सूचनाओं को सिंक्रोनाइज करने देता है.
Next one topic, user interface for desktop and laptop. First term, desktop. The Windows desktop is simply your operating system main screen. This is a start menu. The start menu is the main point of access to your applications. This is a search box. Windows 10 also introduced a search box in the taskbar which facilitate browsing both your computer and the web. And this is a taskbar. It displays more than one open application windows and provides the facility to switch one application to another application. And it's a system tray, means notification area. Let's discuss icons and shortcut. These are icons. This is a my computer icon, network icon, recycle bin icon, and my document icon. Next one topic, how to create a desktop shortcut in Windows 10. Let's follow these steps and create a shortcut in Windows 10. Let's do the practical and see how to create a shortcut. सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, देन जिस भी एप्लीकेशन का हमें शॉर्टकट क्रिएट करना है उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके हम ड्रैग करेंगे डेस्कटॉप की साइड इस टाइप से और हमारा शॉर्टकट रेडी हो जाएगा। तो ये मेथड है शॉर्टकट क्रिएट करने का विंडोज़ 10 पर। नेक्स्ट वन टॉपिक, ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज ऑफ Office Open Suite. It is quite similar to Microsoft Office Word, Excel and PowerPoint application. Word processor, spreadsheet software and presentation software Office Open Suite के application software package हैं। यह Microsoft Office Word, Excel and PowerPoint applications के समान है। Next one topic, GNU project. It is established in 1984 by Richard Stallman, who believes that software should be free for restriction against copying and modification in order to make better and efficient computer program. GNU 1984 में रिचर्ड इंस्टॉलमैन के द्वारा स्थापित किया गया था, जिनका ये मानना था कि सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट और मॉडिफिकेशन जो कि उसे बेहतर बनाने में प्रभावशाली होता है का प्रतिबंध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर नहीं होना चाहिए। Next one topic, difference between open source software and proprietary software. First one difference, open office software refers to the software that is developed and tested through open collaboration, but proprietary software refers to the software that is owned by the individual or the organization that developed it. And second one difference, anyone with the academic knowledge can access, inspect, modify and redistribute the source code, but in proprietary software only the owner and publisher who hold the legal property right of the source code can access it. And third one difference, open office software provides better flexibility, but proprietary software there is a very limited scope of the innovation with the restriction and all. And fourth one difference, open office software examples like Android, Firefox, LibreOffice, Ubuntu, etc. And proprietary software examples Windows, Mac operating system, Adobe Flash Player, etc. Next one topic, Ubuntu operating system. Ubuntu is a complete Linux open source operating system. It is free of cost, available for individual, community and professional use. Ubuntu एक पूर्ण Linux open source operating system है। यह किसी व्यक्ति, समुदाय या प्रोफेशनल प्रयोग हेतु फ्री में उपलब्ध है। Ubuntu includes the very best in the transactions and accessibility infrastructure that the free software community has to offer to make Ubuntu usable by as many people as possible. Ubuntu में ट्रांसलेशन एंड एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से शामिल है जो कि फ्री
सॉफ्टवेयर कम्युनिटी को पेश करता है ताकि उबंटू को अधिक से अधिक लोगों द्वारा उपयोग करने योग्य बनाया जा सके। उबंटू पूरी तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है। एंड लास्ट वन टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन उबंटू एंड विंडोज। फर्स्ट डिफरेंस, उबंटू इज completely free but needs to pay for Windows. Second difference, Ubuntu desktop OS can also as server, but Windows desktop OS does not support server. Third, mostly it is virus free operating system, Windows is not. Fourth one, Ubuntu support multiple desktop environment, but Windows does not. And fifth one, Ubuntu operating system has its own software manager, but in a Windows does not have that. So dear friends, I hope everything is clear for you. In this video, you learn operating system for mobile phones and tablet like Android operating system, iOS, BlackBerry operating system, Windows operating system for mobile, and also you learn OpenOffice softwares and GNU project and Ubuntu operating system. In the next video we will start a third chapter, word processor, and it's a request to all of you guys, if you didn't subscribe my channel, please do it now, and also press the bell icon for the future update, and share this video to your friends and relatives so this video can reach to more students. Thank you so much for watching everyone. Bye bye.